Welcome to We Learn, Virtual Learning Network. Today, this is session number 3 of Constitution of India and Ethics. Topics to be covered under this session. First is the introduction part. Second, composition of the Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly. What is the status of the Assembly? Committees of the Assembly. Making of the Constitution. Criticism of the Congress Party's role in making the Constitution. Appreciation of the Congress Party's role. In introduction, we are going to cover what is basically why there was a need of a Constituent Assembly, how it was framed, framing of our fundamental law by a grand Constituent Assembly. We required an assembly before independence also because we want to frame our fundamental laws to how to govern India, like how to make it an effective, very good country. We need some rules and regulations to be followed. So these rules and regulations can be framed only when there will be a grand constituent assembly. And for this part, earlier also there was a demand for constituent assembly in the form of Swaraj in 1905, and then again in 1922 again Mahatma Gandhi put forward the idea that the future of the country should be determined by the freely chosen representatives of the nation. अगर हम हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे नेशन के और वो फंडामेंटल लॉज कुछ बनाना चाहेंगे, उनकी हम एक असेंबली पहले उन लोगों की मिलकर बना लेंगे जो कि हमारे फंडामेंटल लॉज को बनाएगी. Even everybody has favored for this. Jawaharlal Nehru, he has also in 1938, Jawaharlal Nehru gave a definite shape to this demand. The Indian National Congress stands for independence and a democratic state. This was his opinion. It has proposed that the Constitution of Free India must be framed विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. अभी तक आउटसाइड इंटरफेरेंस थी हमारे, जो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस थी उसमें हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के इफ़ेक्ट्स थे. बट इस टाइम उन्होंने डिमांड की कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना चाहते हैं विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस. उसी के लिए देन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, एंड दिस असेंबली वर्कड फॉर 3 years for formulating the constitution. Why there was a demand for a constituent assembly? The Act of 1935 failed to satisfy the Indian aspirations. जो हमने लास्ट सेशन में अपने करा है एक्ट ऑफ 1935, अकॉर्डिंग टू विच द मेन फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1935, you already know what are the main features of 1935 Act. According to that act, Indians were not satisfied. They are not meeting this was not meeting the demands of Indian people. Then in 1938, as I told you, that Pandit Nehru formulated the demand for Constituent Assembly. For this, Cripps Mission, acceptance of demand. Cripps Mission came in 1942 and recognized the demand that Constituent Assembly is required, a constitution to be framed by an elected Constituent Assembly, India to be given a dominion status. This was Cripps Mission, and Cripps' proposal were rejected by British Parliament. So Gandhi ji started Quit India movement. उसके बाद 1942 की जो भारत छोड़ो मूवमेंट थी, मुहिम थी, वो गांधी जी ने स्टार्ट की, जिससे उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़कर जाओ. What is the composition of the Constituent Assembly? It keeps on changing. Initially, very earlier, it was like 296 members from the Indian legislative provinces, which were be elected from the provinces. All the members, 296 members. Then it was, although in the slide it is written 292, this was the later statement. Earlier it was 296. Then there was 92 members to be allotted by princely states, those small Indian states which are known as princely states. And
This was later on changed to 292 to be elected from provinces and 93 to be nominated from princely states, 4 to be nominated from chief commissional areas. These are the members of the Constituent Assembly, number of members from different parts for the Constituent Assembly. And seats in each province is divided according to the population. They take into consideration of the population of particular community in that respective province. So the last point is describing seats to be distributed equally among three main communities in each province: Muslims, Sikhs and general in proportion to their respective population. इसके लिए what they did, how they formed this Constituent Assembly. Elections हुए, elections to the Constituent Assembly. These elections were not direct elections. These were indirect elections as planned by the Cabinet Mission. Cabinet Mission ने जो planning की थी in having the composition of the Constituent Assembly by means of indirect elections. And these indirect elections, because उसमें क्या था, कांग्रेस को पता था कि मोस्टली जो हैं अभी तक के जो इलेक्शंस हुए हैं आउट ऑफ जो पुराने पहले जो भी हुआ है उसमें जो टोटल सीट्स थी उसमें मैक्सिमम जो सीट्स थी वो कांग्रेस को मिली हुई थी. तो इट डिक्लेयर्ड द थम्पिंग विक्ट्री इन द इलेक्शन टू बी हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो. सो दे एग्रीड टू दिस पॉइंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी जैसे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी. सो in it provincial legislative assemblies took part in elections. तो जब elections हुए तो कांग्रेस पार्टी filled 203 general seats out, and out of this additional Congress party elected 4 Muslims and 1 Sikh candidate that gave it to the strength of 208 out of 292 seats allotted to provincial legislative assemblies. Then the Muslim League members won all the 7 seats reserved for Muslims. Then the remaining 16 seats went to 5 small groups. That is to Sikh 3, to Unionists of Punjab 3, to Communists 1, to Scheduled Caste Federation 1 and to Independents 8. And 93 members, as I told you earlier also, were nominated by princely states. And on 1947 the number, actually this number keeps on varying, like थोड़े थोड़े प्रोविंसेस की बाउंड्रीज में चेंजेस आते गए और उस हिसाब से कितने मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आने हैं और कितने हमारे मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स में से आने हैं, that kept on varying. And finally on 1947 the number was 229 from provincial legislative assemblies and 70 from the princely states. Then what happened? There was no effect of communalism on Constituent Assembly for very reason or the dominant position of the Congress party. Because Congress इसमें dominate कर रही थी, तो there was no, as उनका जो बेसिकली जो कांग्रेस का फेज था मोर ऑफ हिंदुइज्म की तरफ था, एंड दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मिरर ऑफ द नेशन. एंड द कांग्रेस हैड विद इन इट्स फोल्ड लीडिंग हिंदूज लाइक जवाहरलाल नेहरू, पटेल, प्रसाद, एंड इसमें एमिनेंट मुस्लिम्स भी थे जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, in addition to prominent member belonging to all other communities whether big or small. So it was joint constituent assembly बनाई गई, but the first meeting of this joint constituent assembly was held on December 9, 1946, but it was boycotted by Muslim League. जब मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट किया तभी ये नंबर जो है, जो हमने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया है, वो वेरी भी किया है. मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट असेंबली फॉर पाकिस्तान. तो माउंट बैटन प्लान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब 26 July 1947 गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन announced the setting up of a separate constituent assembly for Pakistan. This was after Indian Independence Act. Now, the Constituent Assembly of India on 14th of August 1947, the
Constituent Assembly for India reassembled. Dr. Rajendra Prasad was elected as its president. 7-member drafting committee was formed, and Dr. B.R. Ambedkar acted as chairman of this drafting committee. ये बहुत सारी कमेटीज़ इसके लिए बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस था, इट वाज टोटली डिफरेंट. बिफोर 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was not a legal sovereign body. इसको कोई भी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी की एग्जिस्टेंस नहीं थी. ऑल्दो ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड made it and according to the cabinet mission plan, but they had not committed itself to any course of action. But after this Independence Act, status of Constituent Assembly changed to Dominion Parliament. It became independent. Assembly settled down for freely drafting the Indian Constitution. उससे पहले तक इसका कोई as such important काम नहीं था, but Independence Act आने के बाद इसकी importance बढ़ गई और इसको एक डोमिनियन पार्लियामेंट का स्टेटस दे दिया गया. देन बहुत सारी कमेटीज़ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाई गई. मोर देन 15 कमेटीज़ वर देयर. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो 15 कमेटीज़ जो बनाई गई हैं वो ऑलमोस्ट इस तरह से थी. 7 of the Constituent Assembly had a total of more than 15 committees. 7 of them, such as the House and Staff Committee, had minor functions. The brick and mortar of the structure were provided by the reports of the Union Powers Committee, the Union Constitution Committee, the Advisory Committee on Minorities, Fundamental Rights, the Committee on Chief Commissioner Provinces, the Committee on Financial Provisions of the Union Constitution, and the Advisory Committee on Tribal Areas. These committees submitted their reports between April-August 1947, which were considered by the Constituent Assembly. On the basis of these decisions, the final shape of the Constituent was taken, but the most important committee, which was appointed as drafting committee on 29th of August 1947 to consider the draft of the Constitution. For that, Dr. Ambedkar was appointed as the chairman, and it had six other members also in that committee. And this was the most important committee, and the draft which was proposed by the draft committee, it was published in February 1948. The making of the Constitution. As I told you earlier, Dr. Rajendra Prasad was elected President of the Constituent Assembly, and they submitted their report. And how much time they have taken? It took 2 years, 11 months and 18 days in framing the Constitution. The Constitution was enacted and adopted on 26th November 1949. Some of the provisions relating to citizenship, elections, provisional parliament, etc. came into force on the same day. Remaining provisions came into force on 26th of January 1950. तो completely जो हमारा constitution आया, that came, although 26 नवंबर 1949 में they have this was enacted and adopted, but completely implement हुआ with all the small provisions relating to citizenship, elections, this provisional parliament, etc. Then remaining जो भी इसके अलावा जो provisions थे वो सब force में आ गए on 26th of January 1950. इसके क्या salient features हैं? This is a written constitution, enacted constitution, and it is a lengthy constitution. राइटिंग में हमारे पास कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद इसके ये लागू भी किया गया, फोर्स भी किया गया, एंड इट इज़ क्वाइट लेंदी ऑल्सो. क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस पार्टीज रोल. कांग्रेस पार्टी का इसमें एक अहम भूमि थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में. उनके बारे में व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, what is the criticism now? Not merely acted as national and political organization, but became the parliament and interim government and sovereign constitutional convention. जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्क होता था बेसिकली वो जाकर उनके कांग्रेस के
कार्यालय में जाकर होता था। कहने को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था, बट मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कांग्रेस के मेंबर्स की थी। तो वॉट एवर द कांग्रेस ओलिगार्की यूज टू से, द रिच एंड द मोस्ट important people used to say about this framing of constitution, all these things were taken into consideration. जैसे कि it was a small section of the Congress in which there were top leaders like Nehru, Patel, Rajendra Prasad, Azad. इसको ऑस्टिन ने कांग्रेस ओलिगार्की कहा था। तो फॉर्मल सेंटर ऑफ वर्क जो थे वो तो चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी था, बट जो रियल प्लेस ऑफ वर्क थी वो प्रेमिसेस था कांग्रेस लीडर्स का। वो आपस में मिलते थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती थी। बेसिकली वो एक पार्लियामेंट और एक गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी, द असेंबली, द कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट वर लाइक द पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो तीनों के तीनों जो थे एक ट्रायंगल की तरह बने हुए थे। एक ट्रायंगल के 3 एंड्स, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एक कांग्रेस को और एक गवर्नमेंट को दे रखा था, एंड तीनों ओवरलैप हो रहे थे। सो द कांग्रेस वॉज द गवर्नमेंट टू, एंड they were separate entities also, all the three, but linked by overlapping membership. They assumed a form infinitely meaningful to India. एप्रिसिएशन भी है। एप्रिसिएशन इसलिए है कांग्रेस की कुछ कामों में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर्स इसमें उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। उनकी थिंकिंग इम्पॉर्टेंट थी। वॉट एवर दे थॉट एट दैट टाइम, इट वॉज कम्प्लीटली बेनिफिशियल फॉर इंडिया। कांग्रेस लीडर्स यूज टू मीट एंड टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, और जब भी वो डिसीजन लेते थे इट वॉज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। दे डोंट कंसिडर देयर पार्टी at all. They don't think that this will interest party the most. They had never thought about like this. Maintained non-partisan character, did not favor even a single article of party's interest at the expense of other political parties. अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान करके अपने पार्टी को फेवर में लाकर कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऐसा उसमें रूल लॉ रेगुलेशन नहीं बनाया जो सिर्फ उनकी पार्टी को फेवर करेगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। दे वर completely isolated from these type of things, and whatever they did in the constitution was the best at that time. Now you do it yourself. A few questions for you people. Describe the composition of the constituent assembly. मैंने आपको बताया कि ये कॉम्पोजिशन जो है बिफोर 1947 एक्ट के डिफरेंट थी, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग के भी 7 मेंबर्स थे और उसमें जो है थोड़ा थोड़ा काउंट में डिफरेंस था। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इलेक्ट किए जाते थे फ्रॉम द provincial legislative assemblies, and few members are nominated by the princely states. These are not as such elected, these are only the allotted ones. एंड जैसे जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो कुछ जो थे वो मुस्लिम पाकिस्तान की जो थी अलग से बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें जो है मुस्लिम्स वाला पार्ट वो चला गया। सो नंबर फाइनली वेरीड, एंड आपको वो सारी कंपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपने बताना है कि कितने दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, कैसे बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनाए गए, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, और 6 मेंबर्स और थे उनके पास। फिर उन्होंने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन January 21, 1948 एंड इट वाज रिलीज्ड टू पब्लिक ऑन 26th of February. The draft constitution was submitted to the Constituent Assembly on November 5, 1948, after 3 readings, finally passed and adopted by it with a number of changes on November 26, 1949. Thus, the Constituent Assembly took 2 years, 11 months, and 8 days to frame the new constitution. The Assembly held together 11 sessions for a period of 165 days, of which 114 days were devoted to the consideration of the draft constitution.
The Constitution in its final form contained 395 articles and schedules. It came into force on 26th of January 1950 with complete force. This all you need to explain under this. Thank you. Happy we learning.